So now we'll see this next topic, which is on the status of refugees in India. You must have come across the term refugees, and every now and then you would get to hear about some current affairs news related to them. So you will have to understand this aspect also, because again, this becomes very handy for the prelims and the mains perspective both. Here, our focus will mostly be on the mains perspective, but in between, there will be certain information that you can use for your prelims. I mean, that could help you answer if any questions are asked from the topic. Before we begin understanding about the status in India, this is a segment directly borrowed from UNHCR, the UN Refugee Agency. The reason being so that you might have got this confusion about the different terminologies which look similar, but then we're not very clear about the exact meaning or the definitions of the same. So it is directly giving in it's directly given in their website that who are the group of people which are helped by UNHCR. That's a UN agency, as you can see here. So they have talked about, let's say, asylum seekers first of all. So who are the asylum seekers? Those who would seek asylum. So they are those individuals, they are seeking international protection. So they are seeking asylum, which means they are seeking international protection. That could be for any reason. For example, let's say you talk about कि जैसे इंडिया में ही अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया गेव द पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा एंड द फॉलोअर्स इन 1959. ठीक है. उसके अलावा आप बात कर सकते हो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस असाइलम सीकिंग इज़ लाइक अगर कोई विसल ब्लोअर है तो वो अगर अपना कंट्री उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, they might flee to another country and they might seek protection from there, like some similar reasons could be there. Then another term is your internally displaced people. तो यहाँ तो term ही बता रहा है that it is about the internally displaced people. So people who are displaced but internally, ठीक है. So they will seek the safety in other parts of their own country. So not in मतलब some other country, but in their own country. For example, you can talk about, let's say, वी हैव द इशू ऑफ ब्रू रिफ्यूजीज़ इन इंडिया. अभी आप लोग नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है वो सुनते होंगे. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, लेट्स से, द कश्मीरी पंडित्स इशू. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजीज़. ठीक है, ऑल ऑफ दैट कुड बी द डिस्प्लेस्ड पीपल. देन ओनली द टर्म रिफ्यूजीज़, जिस पे हम अभी फोकस करेंगे. सो दे आर द पीपल हु आर फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन. सो इफ देयर इज़, लेट्स से, एनी वॉर और एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड दे आर बीइंग परसिक्यूटेड, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जैसे कि अगर आप रोहिंग्याज़ की बात करते हो, सो वी हैव गॉट अराउंड लाइक सो मेनी रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन इंडिया फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, सो देर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स रिलेटेड टू दैट. सो रिफ्यूजीज वुड बी द वन हु आर फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन. देन यू हैव स्टेटलेस पीपल. तो अगेन आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा दैट दीज आर द पीपल हु विल नॉट हैव एनी स्टेट, which means they will not have a nationality. Now, the reason of doing this in the end is because I have already given you so much information related to citizenship that you now should be able to understand the significance of it. In citizenship, we talked about what is the significance of belonging to a nation, and if we become stateless, what happens to us? We do not get rights, we have no recognition, etc. So therefore, now in the end, this is the last topic for citizenship, and now you can relate. I think about 8 to 9 videos have been covered over several aspects of citizenship. So now you can relate with that. So they will be those people who do not have a nationality and they can struggle to realize their human rights. They will have to struggle because जब nationality नहीं है तो आप human rights claim किसके पास करोगे? So that's a very pathetic situation again. Then you have another group of people, returnees. They are people who have finally returned home. And then it is just given that they also help safeguarding individuals, because every human being deserves a life which is free from persecution and discrimination. So basically our subject matter for this video is refugees, but just so that you do not get confused with different terms, this is the description directly taken from UNHCR. Now moving ahead with the discussion of refugees. So refugees कौन होते हैं? Now you know that according to UNHCR, a refugee is somebody who has been forced to flee his or her own country because of issues like persecution, war, violence, etc. ठीक है, definitely if they would try to return home, that would not be easier for them because the reasons of their getting away from home is very very crucial here. अगर हम इंडिया में बात करें, because our concept here would be relating to the status of refugees in India. ठीक है, तो if we talk about, let's say, certain examples of refugees in India. So in what context we can talk about? Let's say हम internal
और एक्सटर्नल, दोनों पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंटरनल रिफ्यूजीज़ पे बात करते हैं तो इंटरनल पीपल हु आर ट्राइंग टू टेक रिफ्यूज इन इंडिया, टेक हेल्प इन इंडिया, ठीक है। सो जैसा आपको बताया, कश्मीरी पंडित्स, दे आर डेफिनेटली इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो, ठीक है। देन यू हैव द ब्रू रिफ्यूजीज़। उसके अलावा वेस्टर्न पाकिस्तान से रिफ्यूजी, स्पेशली द हिंदूज एंड द सिख्स, यू नो, हु माइग्रेटेड from erstwhile Western Pakistan after the partition. बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल पे अगर आप बात करते हो तो एक एग्जाम्पल आपको पता है दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर्स का, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, दे हैव गॉट देयर सीट, राइट। उसके अलावा चकमा एंड हजोंग जो ग्रुप है बांग्लादेश से, उनके बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा। सो प्रीलिम्स में यू कैन गेट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑल्सो। देन यू हैव द रोहिंग्याज फ्रॉम म्यांमार। अब म्यांमार से ही जब इनका मिलिट्री कू हुआ, ठीक है, ये तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है, तो भी बहुत सारे पीपल दे केम एज रिफ्यूजीज टू इंडिया, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कमिंग फ्रॉम म्यांमार। देन यू ऑल्सो हैव श्रीलंकन Tamil refugees who entered India, ठीक है, and they are residing in Tamil Nadu. So different, these things have happened over a period of time. In different years, different things happened. So these are just some of the broader examples. Of course, there could be more to it, but some of the prominent known examples are there. The reasons for the refugee crisis you have already understood: displacement because of war, conflict, trafficking could be there, etc. And they are persecuted because of that. अब बात आती है इंडिया में हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं। अगर हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड एज रिफ्यूजीज, सो व्हाट इज़ द कंडीशन इन इंडिया, ठीक है। सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज इन दैट मैनर, और what are the reasons probably why we are taking it. Of course there are challenges associated, that also will do. Firstly तो हम जो बात करते हैं, there are certain fundamental rights which we know, which are only for the citizens, but there are fundamental rights in our constitution that we have got for all the people, and that include refugees also. So when we'll do the next topic of fundamental rights, you will come across those fundamental rights, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है ही। उसके अलावा certain international conventions, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें, नाउ हियर प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन कुड बी फॉर्म्ड. So you have a refugee convention of 1951. Although India is not a party, but there are conventions and therefore India decides कि नहीं, हमें humanitarian grounds पे लेना चाहिए. Then India follows the internationally accepted principle of non-refoulement. ठीक है, इंडिया रिस्पेक्ट्स दिस. अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्या कहती है, दैट यू शुड नॉट फोर्स, so not, because they are already forced from their own country, right? So not forcing the refugees to return to country of persecution. What is the point of sending them to the country जहाँ से वो भाग के आए because of the persecution? So India respects that. उसके अलावा there is a declaration, that is New York Declaration, that is for the migrants and the refugees, and India is a signatory to this. सब तो करना ही है, ठीक है. उसके अलावा there are certain other rules also. For example, there is Global Compact for safe, orderly and regular migration, ठीक है, ये इसको भी इंडिया ने साइन करा है. So there are multiple international conventions, although it is not binding, but ठीक है, India decides to follow that. What about our domestic laws? Do we have certain domestic laws also? या फिर हम सिर्फ इंटरनेशनली चीज़ों को लेके चल रहे हैं? नो, वी डेफिनेटली हैव. सी, वी एक्चुअली डू नॉट हैव एज सच स्पेसिफिक पॉलिसी, बट वी हैव सर्टन थिंग्स. सो एज सच देयर इज़ नो स्पेसिफिक पॉलिसी और लॉ, ठीक है, related to the refugees in India. But the certain things that I said that we definitely have is
वन थिंग इज़ फॉरेनर्स एक्ट आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी इलीगल माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज़ जो हैं काइंड ऑफ दे आर कमिंग हियर। उसके अलावा पासपोर्ट एंट्री वाली जो एक एक्ट पढ़ाई थी, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी रेगुलेटिंग द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। देन अब तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आ ही गया है, ठीक है। अगर आसाम के केस में देखें तो एनआरसी की बात भी हो चुकी है। So there are certain things which are regulating. We are not telling that it is only allowing or not allowing. The point is that these are the things which are regulating the coming of people, from outside. And then also there have been certain judicial cases also जहाँ पे judiciary ने भी बोला on humanitarian grounds, ठीक है। तो एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट फॉरेनर्स ऑल्सो हैव अ राइट टू बी हर्ड। फिर ये जो नॉन रिफाउलमेंट वाली प्रिंसिपल है, even that was upheld by judiciary in some other cases. So the point is that even judiciary has at times shown that these things have legality and could be accepted here in India. But this crisis is not that easy to deal with. That is like pretty obvious. So there are definitely certain issues and challenges that have to be dealt with this crisis. So what are the issues and challenges associated? फर्स्टली तो आप समझ ही सकते हो कि अब क्या है कि वी हैव नो क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रिफ्यूजीज़ एंड इलीगल माइग्रेंट्स। हम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर लेवल पे ही दोनों को ट्रीट करते हैं, एंड वी डू नॉट हैव अ क्लियर कट गवर्नमेंट पॉलिसी, एनी रेमेडी, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ और डिफ्रेंसिएशन एट्सेट्रा। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर लीगल प्रोविजन। So lack of proper legal provision, ठीक है। उसके अलावा यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम रिसोर्स इश्यूज़ जो इलीगल माइग्रेशन के केस में हमने देखा था। तो रिसोर्स जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, सो दैट इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट, दैट इम्पैक्ट्स आर लोकल पॉपुलेशन, दैट इम्पैक्ट्स आर इकोनॉमी, ठीक है, our society, because social integration and all of that also is difficult to handle. Then definitely burden on the state. These are the obvious things that will happen, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बोलते हो तो there are many rights which are not given to the outsiders, so that also has to be considered. जो हमारे लोकल लोग हैं, and even these people who are coming from outside, they might face the persecution in some or the other manner. That could also be a problem. लीगल रेमेडीज़ नहीं हैं हमारे पास, लीगल प्रोविजंस भी नहीं हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो भी हमारे पास इन लोगों के लिए, इफ़ दे फेस परसिक्यूशन हियर और दे फेस सर्टेन प्रॉब्लम हियर, तो वी डू नॉट हैव एज सच क्लियर कट रेमेडीज़ फॉर दैट मैटर. And one point is also raised by the people who consider this as contradictory, that political parties, it is a blame which is given on them, that the political parties decide that, because we do not have a clear cut law, so political parties decide which refugees will enter and which will not enter India. And CA is a kind of, it is said that it is a kind of a discriminatory example or a provision that is existing here. So yes, these could be put out in the issues or the challenges associated to the refugee crisis in India. Then there are also arguments related to this point. If you can see here that India is accepting the refugees, but as such we have not signed this convention. Okay. So the questions are also at times put regarding this, that why has India not signed the refugee convention? So India is not a party to it. So there are definitely, some of the reasons would be similar to the challenges. जैसे कि एक हो गया आपका रिसोर्स वाला, लिमिटेड रिसोर्स. अभी तो हम एटलीस्ट वी आर नॉट बाउंडेड, है ना, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट वन साइनिंग इट, लाइक यू वुड बी बाइंडेड टू हैव डन दिस. एंड देन यू ऑल्सो हैव सर्टन अदर रिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू uphold our sovereignty. So if we accept this, it might be like kind of unnecessary international influences, especially let's say from UN in our internal matters also. Then border already हमारा बहुत ही porous है,
एंड देर आर टाइम्स जहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है बॉर्डर्स में from the nearby countries, and that could create a problem, a lot of problem for our own people. Then India is already just a developing nation, so having more and more people, there would be increasing responsibilities, and for a developing country things could be challenging in that case. Uske alawa, we are anyways already supporting the refugees in our best of capacity, है ना. तो we are a good leader, or you can say example internationally for that matter, already for help for them. And then definitely जो social challenges होंगे limited resource के ही अंडर में, जो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, तो वो तो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल एंड कल्चर को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के, बजट, सिक्योरिटी रिस्क एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट. अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है दैट दिस कन्वेंशन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस विच इंडिया इज़ फेसिंग इन नॉट साइनिंग दिस, वो तो अपना है, बट दिस कन्वेंशन ऑफ 1951, उसमें भी एक प्रॉब्लम है. उसमें क्या प्रॉब्लम है दैट यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी इंक्लूड्स ओनली दोज पीपल who have faced the violation of civil and political rights, जिनके civil political rights जो हैं वो violate हुए हैं, and not economic rights. ठीक है, तो the definition is not very comprehensive in that case for this also. उसके अलावा UNHCR का जो रोल है, so India has been skeptic about it. Then developed countries जो हैं, they are anyways violating the convention always in letter and spirit, and the West puts so much of restrictive measures and the burden falls on the developing countries. So there are certain challenges related to it. हाँ, ये ज़रूर है कि if India, what happens, let's say if India signs this convention, so if India signs this convention, India might act as kind of a guide for the other neighbors, that okay, or set an example for the neighbors, ठीक है. So you can also like have कि we have certain mechanisms internally and we can deal with the refugees coming, we can have the changing situations, we can try to accommodate them. If we get financial assistance from international organizations, that could also help us decide to agree to the convention. So there are things like if we have the solutions to the problem existing, we might take the steps about it. That could be one thing. And then इंडिया की इंटरनल एज सच यू नो दैट देर इज़ नो स्पेसिफिक रिफ्यूजी पॉलिसी और लॉ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. दैट लेट्स से इफ़ वी हैव अ सेक्शन ऑन शुड इंडिया हैव अ रिफ्यूजी पॉलिसी, सो डेफिनेटली देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ येस and arguments of no, I mean in favor and against. So अगर हम yes पे बात करते हैं तो we can talk on certain things, let's say like the human rights, that yes, because we value human rights, we anyways are doing so much for the people coming from outside, ठीक है, तो ये होना चाहिए. उसके अलावा एक और हम बोल सकते हैं कि if we will have a refugee policy, हम जो हैं एक better monitoring and mechanism create कर पाएंगे to help them. That could also be helpful. Then उसके अलावा definitely example for other democracies, we can do this. But then there are challenges associated, or let's say arguments against having this. Firstly, कि because there is flexibility in deciding which refugees are you considering or not, तो वो अगर नहीं होगा तो ही एक policy work करेगी, ठीक है. None of neighbors of India have a refugee policy. They do not have it. So if they do not have it, the chance is that the burden will fall on India. ठीक है? So these are certain challenges which you can quote, telling that if India will have a refugee policy, we can have these prominent challenges. I've already given you the meanings and the definitions of these terms directly from the website, so you can have a look at it. And as you come across any community, for example ब्रू refugees जो आप न्यूज़ में सुनोगे, आप उस पर थोड़ा सा अलग से पढ़ो, और रोहिंग्यास पर पढ़ो, ठीक है, चकमा जोंग पर पढ़ो, तो any community that you will come across in the news, now you can keep adding this to your this particular lecture. So I'll meet you guys in the next video. Then we'll start with the fundamental rights. Thank you so much. Take care till then. Bye bye.